Hi guys, this is a very important topic related to Java 17. So we already discussed some of the key concept. Java 17 के key concept हमने पहले भी discuss किए हुए हैं. इसके लिए एक separate video upload किया. What is a record? Correct. So theoretically, I guess you already aware about that. These are immutable by default. You will get automatically getter and setters, right? So getter methods you already get it for each and every field. तो आपको generally हम लोग lombok use करते हैं, right? And then you will have that automatic getter setters using the lombok annotations. But यहाँ पर वो भी use करने की जरूरत नहीं है. Automatic two string equals and hash code methods are basically will be available. तो two string यदि आप नहीं provide करेंगे, so you need to explicitly override the two string method. Normally यदि आप किसी क्लास को आप यूज करते हो तो आपको टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करके उसमें डिटेल देना पड़ता है. करेक्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट यहाँ पर आपको ये टू स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटोमेटिकली, ये जनरेट होके मिलेगा एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. अभी हम उसका भी एक एग्जांपल देखेंगे कि हाउ बेसिकली टू स्ट्रिंग मेथड विल हेल्प इट टू यू. सो द टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिकॉर्ड. ठीक है. और स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशंस में भी अब उसके तीन चार फील्ड्स हैं, तो वो फील्ड्स का कॉन्केटनेशन करके एक कंप्लीट डिटेल्स आपको टू स्ट्रिंग में मिलेगा. करेक्ट. इक्वल्स मेथड चेक इफ टू रिकॉर्ड्स आर स्ट्रक्चरली इक्वल्स और नॉट. हैश कोड मेथड से आपको पता है कि ये दो मेथड आपके ऑब्जेक्ट इक्वलिटी और के लिए यूज होते हैं. करेक्ट. तो यहाँ पर हैश कोड मेथड विल आल्सो यू विल हैव हाउ यू कैन चेक द हैश कोड फॉर टू डिफरेंट रिकॉर्ड्स. तो ये टू थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. करेक्ट. कॉम्पैक्ट सिंटेक्स, अभी आपको बहुत ज्यादा सिंटेक्स नहीं लिखना है, ये मेथड्स आपको रेडीमेड मिल चुके हैं. करेक्ट. और भी काफी सारी नो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर. सो रिकॉर्ड्स डू नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर and instead they have a compacted constructor that initialize the component of a record. मतलब you will have a compact constructor. अभी हम वो भी देखेंगे कि how you can create a constructor. You can use the constructor and you can without writing any complete separate function as a constructor, and you can just, and these are finally by default. Another thing is that interface compatibility. Correct. So records can implement the interfaces here. So abhi let's see ki how these particular points we can use it. So we have one of that, but let's say I will create that one of the records, something we called as a customer. No. So here you can come and you can find out something called as a record. So here I will say customer. So this is a customer record. I'm just creating it here, right? In this customer record, oh, I have created, so you can find it. Okay. So this record, as of now, there is no such parameters, and I will just try to use and how we can use a simple record. पहले हम देखेंगे कि ये simple record तो account processing का एक main method है. मैं अभी ये हटा दे रहा हूँ यहाँ से. ठीक है. Customer C, मतलब जैसे normally we are creating an object of any other, what we can call as other classes, almost you can see everything is remain same. But आपको immutable यदि बनाना है किसी class को, so you need to do some extra work. यदि if you wanted to use two string method, then you need to do some work here. Correct. Getter setter के लिए आपको extra code लिखना पड़ता है, और otherwise you need to use a lombok. All these things you don't need to do it here. Correct. And these are final by default. तो यहाँ पर यदि तुम देखोगे कि कस्टमर सी इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, तो अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल. करेक्ट. सो सी डॉट टू स्ट्रिंग. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर एक और आई विल जस्ट पुट इट हियर, राइट, रिकॉर्ड डिटेल्स. ठीक है. समथिंग लाइक दैट यू कैन राइट इट. नाउ आई विल जस्ट राइट इट, run as a Java application. So you see record details customer. अभी इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, टू स्ट्रिंग मेथड में यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. बट यदि मैं यहाँ पर राइट पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग नेम
string email. मतलब you can think like this. आप एक you are creating a parameterized constructor. तो एक parameterized constructor आपने क्लास में create किया है, then how you write it? So in the same way you can pass it like this. Correct है? अब again I will come into account processing here. You see this error here. You need to add two arguments. So name and what is the other parameter here? Email. तो हम यहाँ पर पहले एक name pass करेंगे. So the name will be, let's say, is for James, comma. Here email is james@gmail.com. ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं. अब again I will say to string, right? Let me run it again. Java application. So you see this two string, we haven't override written any syntax. You are getting that complete details, name and email like this. Correct? So this is the power of this two string method also. Now again, one more thing we will see here. Correct? Second line, we will say some getters also. Plus, ठीक है. तो जैसे हमने बात किया है कि you also get the getter dot name, right? So do we have we written any name method or no? There is no such methods are there. No, right? But still you are getting it here. C dot name. So you see record details, name is a James. So you already got that kind of a getter method here, right? Now what we do, can we, now what we are doing it here, we will add some methods also into a customer here, correct? So this methods, you can also write some method. So let's say public string, right? Get customer location. Okay. Now you can say whatever method, you can just say return move. Okay. Or you can pass some parameters also. That is also you can do it. Okay. Now if I will come back again, so you can also call and these methods as well. So I'm just giving a simple example, right? You can write your business logic as per your need and as per your requirement. So C dot get customer location. Okay. So run as Java application. You see C dot get customer location you are getting as a Mumbai. So idea is ki you can also write some sort of a methods and logic also in this record class here. Correct. So it is not like ki you are just writing only a Pojo classes like this. But if you wanted to write something, write any business logic or things like that, that is also you can write it and you can do it. But can you also create or maybe this particularly customer record can also implement the interface here. So let's say if I will say new, what we can say interface. Here I will write as a customer service interface. Correct. So customer service interface एक interface हम यहाँ पे create कर रहे हैं, right? In this interface, what we are doing it here. Here you can write something like public string validate. ठीक है. And here I am saying string cust name. ठीक है. Now what is happening here? I will implement this or X basically from our record here. तो ये record will implement this interface.
अब आप देख रहे होगी, तो नाउ इट विल से दैट ऐड अनप्रिंटेड मेथड हियर। तो यहाँ पर आपने एक इम्प्लीमेंट मेथड वो कर दिया है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग वी कैन से वैलिडेशन सक्सेसफुल, करेक्ट। So like this, Abhi, you can also add this kind of a logic and you can implement interface, right? So record can implement an interface. अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे again, we will call this method here, right? So what you can do, let's write some logic here. I will write it, say if, right? Cust name is not equal to null and cust name dot, let's say key is not empty. ठीक है. So something like that, I'm just writing some simple logic here, correct? Then you can add another return, not a valid customer. Like this, you can write it. So all this logic, this is a simple Java code. अभी ये simple सा Java code है. ये इसके ये आपको string checks और string methods को use करके आप लिख सकते हो. But as of now, I'm not giving any too many details here. तो वो logic and simple other Java concept इसमें आप डाल के कोई और भी logic आप use कर सकते हो string methods के साथ में. That is up to you. Now coming back to here, what we are doing it here. So in that scenario, get customer. Now, what you can say here, you can say C dot validate. ठीक है. और मैं जब यहाँ पे validate करूंगा इसको, तो I will pass that customer name is, let's say it is for Ryan. ठीक है. So when we are talking about particularly calling this method, so we will validate Ryan, right? अब हम रॉयन को वैलिडेट करेंगे. यू सी दिस रिकॉर्ड सक्सेसफुल, वैलिडेशन सक्सेसफुल, बिकॉज वेन एवर वी पास द रॉयन, तो जब रॉयन हम पास करेंगे तो ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंड वी आर कॉलिंग दिस मेथड. So like this, we have multiple features from the record. So ये सारे features हम use कर सकते हैं. बहुत ही powerful feature है, right? It is really very success required. अभी आप देख सकते हैं यदि पोजो classes हैं, so definitely you will not write any kind of a custom logic here, right? And generally we don't implement any interface from the pojo classes, right? As per the good design. And बेसिकली पोजो क्लासेस हम जब भी बनाते हैं मच मोर इट विल बी टूवर्ड्स फॉर अ डोमेन ऑब्जेक्ट, राइट. वो डोमेन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनता है, करेक्ट. बट इफ यू आर राइटिंग सम ऑफ द बिजनेस सर्विस क्लासेस or any of the classes which contains the logic, over there you can also create record, and these record classes can implement an interface and you can write some logic. और वहां पर आप logic write करके and you can customize that code. But the good thing is that it is a by default is a immutable, so you don't need to consider or think about too much about the thread safety also. So thread safety is a major concern which is you can really understand and which you can implement without doing any other extra work. So I think if you got the point,
और इफ यू रियली लाइक दिस इंटायर कॉन्सेप्ट, यदि आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड यू कैन प्रोवाइड द कमेंट्स. थैंक यू. And in future also, we will make some more videos related to Java 17. So please stay tuned and wait for our new topics related to shield classes and switch cases.